Hello everyone, welcome to IQCIVILS IAS Academy. So IQCIVILS IAS Academy, one of the premier institute of Northeast India. अभी रिसेंटली जैसा कि आप सभी को पता है एपीएससी एज वेल एज यूपीएससी में बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिए हैं IQCIVILS IAS Academy ने। और आगे भी आप देखेंगे ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आप में से जितने लोग यूपीएससी एज वेल एज एपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जल्द से जल्द एनरोल करवा सकते हैं हमारे कोर्सेज में। हमारे कोर्सेज बहुत सारे जो कि आप सभी की डिमांड पर शुरू हो चुके हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन एज वेल एज ऑल ओवर इंडिया। एक तो हमारा चल रहा है इंटीग्रेटेड जीएस प्री कम मेंस। दैट मींस इस बैच में आपका प्री कम मेंस तैयारी होगी। मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में होगी जिसमें 3 कॉन्सेप्ट पे फोकस किया जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, दूसरा कनेक्टिविटी एंड तीसरा कंसोलिडेशन, ताकि आप चीजों को रिलेट कर सके। प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से कैसे आंसर राइटिंग करनी है, सारी चीजें इस बैच में प्रैक्टिस करवाई जाएंगी। दूसरी चीज, आप में से जितने लोग सोच रहे हैं कि टेस्ट सीरीज कहां की लगाएं, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, फिर से सुनिएगा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने जा रही है बाय IQCIVILS IAS Academy, जिसमें आपकी रैंक ऑल इंडिया बेसिस पर प्रोवाइड की जाएगी। समझ में आ रहा है? एंड दिस टेस्ट सीरीज फॉर APSC एज वेल एज UPSC पैटर्न। और ये टेस्ट सीरीज शुरुआत हो रही है नवंबर लास्ट वीक। तो अब इस टेस्ट सीरीज पर एक अलग प्रोमो वीडियो भी आएगा कि किस तरीके से टेस्ट सीरीज शुरू होंगी। आपको एक करिकुलम दिया जाएगा, उस करिकुलम के हिसाब से आपको अपनी तैयारी को जारी रखना है। समझ में आ रहा है? और ये टेस्ट सीरीज आपकी 6 months to 7 months ड्यूरेशन होगा टिल योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। क्लियर? तो जितने लोग, देखिए, प्रीलिम्स का मतलब होता है प्रैक्टिस। सबसे जरूरी चीज, पढ़ने से काम नहीं चलेगा जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। समझ में आ रहा है? कितना भी आप पढ़ लें, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो प्रीलिम्स का मतलब ही है प्रैक्टिस, तो इस पे फोकस करना ही करना है आप सभी को। इसको आप नेग्लेक्ट कर नहीं सकते। ऐसा कोई भी टॉपर नहीं, ऐसा कोई भी एस्पिरेंट नहीं जिसने बिना प्रैक्टिस के एग्जाम्स क्लियर किए हो। समझ में आ रहा है? यूपीएससी और एपीएससी इज नॉट अबाउट रीडिंग नंबर ऑफ बुक्स, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट रिकॉलिंग द थिंग्स, इट्स ऑल अबाउट रिविजन। क्लियर? तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, तो जितने लोग सोच रहे हैं टेस्ट सीरीज का, तो आप जल्द से जल्द एनरोल करवाएं IQCIVILS IAS Academy में। क्लियर? और इसी के साथ ही साथ और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसके लिए आप इंस्टीट्यूट में कॉल करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो हमारा जियोपॉलिटिक्स ऑफ बे ऑफ बंगाल रीजन पर है इन 21st सेंचुरी। माई सेल्फ हर्षित ओमर, सीनियर फैकल्टी ऑफ IQCIVILS IAS Academy फ्रॉम डेल। तो आज हम इस इशू पर चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एडमिशंस की लाइन ओपन है फॉर अक्टूबर एंड नवंबर बैच। तो जल्द से जल्द आप एनरोल करें अपना नेम। क्लियर? तो अब आज हम बात करेंगे बे ऑफ बंगाल रीजन। हालांकि बे ऑफ बंगाल रीजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रीजन है जियोपॉलिटिक्स के लिए। समझ में आ रहा है क्यों जियोपॉलिटिक्स के लिए इंपॉर्टेंस है? इसके पीछे आज हम बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं।
ऐसा क्या है बे ऑफ बंगाल रीजन में कि ब्रिटिशर्स ने भी पहली कॉलोनी जो बनाई बंगाल को बनाई? तो अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया था द हिंदू में, और वो आर्टिकल था रीडिस्कवरिंग द बे ऑफ बंगाल। अब रीडिस्कवरी बे ऑफ बंगाल, ये आर्टिकल था राजीव रंजन चतुर्वेदी का। अब इन्होंने ये आर्टिकल बड़ा ही अच्छा लिखा, हालांकि इसके पीछे रीजन ये था बिकॉज सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज जो है, जो कि एक सेंटर बन गया है नालंदा यूनिवर्सिटी में, और ये जो सेंटर है इसका मेन एम है कि बे ऑफ बंगाल की इंपॉर्टेंस को समझा जाए। समझ में आ रहा है? आज चाहे आप एक्ट ईस्ट पॉलिसी देखें, चाहे इंडो पैसिफिक रीजन देखें, बे ऑफ बंगाल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों? बिकॉज बे ऑफ बंगाल जो है ये एक ब्रिज है। ब्रिज किसके बीच में? साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। समझ में आ रहा है? और बे ऑफ बंगाल रीजन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है? टू काउंटर चाइना। समझ में आ रहा है? सो आज बे ऑफ बंगाल जो है, आज हम देखेंगे कि 21st सेंचुरी में फिर से बे ऑफ बंगाल रीजन में जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल, जियो कल्चरल एक्टिविटीज फिर से आप देखेंगे शुरू हो चुकी। वाई? बिकॉज बे ऑफ बंगाल इट इज अ वेब ऑफ मैरीटाइम हाईवेज। वेब ऑफ मैरीटाइम हाईवेज। वेब ऑफ मैरीटाइम highways. Okay, it is also a chessboard of relationships and mobilities. It is a vital region for several countries like littoral states. littoral states कौन कौन से हैं बे ऑफ बंगाल के? अगर हम लिटोरल स्टेट्स की बात करें तो लिटोरल स्टेट्स कौन कौन से हैं? लिटोरल स्टेट्स में आ जाता है इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश। As we all know, Myanmar is a gateway for India towards Southeast Asia. म्यांमार एक गेटवे है, एक दरवाजा है। समझ में आ रहा है? एंड देयर आर अदर रीजन ऑल्सो फॉर बे ऑफ बंगाल, लाइक थाईलैंड इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका इंपॉर्टेंट है। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। एंड देयर आर अदर लैंडलॉक्ड नेशंस who are dependent on Bay of Bengal region for maritime trade and commerce, like Nepal, landlocked nations. Like Nepal, Bhutan, China, and of course, whole northeast India dependent on Bay of Bengal region. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। So Nepal, so remember this thing, India as well as Southeast Asia, that means South Asia and Southeast Asia, इनके बीच में जो लिंक है वो लिंक क्या है? बे ऑफ बंगाल रीजन। क्लियर? एंशिएंट टाइम्स में इसको बोला जाता था इंडो चाइना। इंडो चाइना यहीं से शुरुआत होता है, ये याद रखिएगा। इंडो चाइना लैंड कौन सा है? थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, इंडो चाइना लैंड। इंडो चाइना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट फॉर सिल्क ट्रेड एंड स्पाइसेस। समझ में आ रहा है? तो इस रीजन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है? इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैरीटाइम सिल्क रूट। क्लियर? तो आज हम कुछ ऐसी ही चीजें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट for your international relations as well as जिनका PSIR ऑप्शनल है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस करंट अफेयर्स। क्लियर? प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री ऑल्सो, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंस है, तो हमें इस वीडियो को नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना। समझ में आ रहा है? ताकि आपके साथ ही साथ लोगों को भी पता चले बे ऑफ बंगाल की इंपॉर्टेंस क्या है। क्लियर? सो नाउ
Bay of Bengal region. So here you can see this map. अब आप देख सकते हैं from here Thailand, Malaysia, this side Myanmar, okay, Bangladesh, Bhutan through India, Nepal through India, then this India and Sri Lanka. These are some surrounding nations. समझ में आ रहा है? ये सब क्या है? सराउंडिंग नेशंस. बहुत ध्यान से मैप को देख लीजिए. समझ में आ रहा है? रिमेंबर दिस थिंग. So basically Bay of Bengal can be seen as a nodal crossroad and the cultural hub for a network of exchanges as well as contact of diverse kinds. Okay, so this region is full of diversity, different regions, different religions, everything. तो अब ये न्यूज में क्यों रहा? Because recently the launch of Center for Bay of Bengal Studies at नालंदा यूनिवर्सिटी. तो अभी रिसेंटली नालंदा यूनिवर्सिटी में एक नया सेंटर बना है बे ऑफ बंगाल स्टडीज का. अब बहुत सारे रिसर्चर्स आएंगे, बहुत सारे स्कॉलर्स आएंगे और इंडिया को बे ऑफ बंगाल की एंशिएंट इंपॉर्टेंस को फिर से रिवाइव किया जाएगा. सो दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड इंडियाज कमिटमेंट to advancing constructive agendas in the way. तो अब इंडिया के कंस्ट्रक्टिव एजेंडाज क्या क्या हैं, इन सभी चीजों को समझेंगे. सो सबसे पहली चीज, हाउ सिग्निफिकेंट इज बे ऑफ बंगाल टू इंडिया. बे ऑफ बंगाल इंडिया के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? ओके, तो पहली चीज जो हमें समझ में आती है कि बे ऑफ बंगाल आज एक कमर्शियल हब है, व्यापार करने का मेन रास्ता है, ईस्ट एशिया की तरफ जाने का मेन एक द्वार है, एक रास्ता, एक गेटवे है. सो द बे ऑफ बंगाल हैज लॉन्ग बीन अ मेजर कॉमर्स हब फॉर द इंडियन ओशन, ऑल्सो टुवर्ड्स पैसिफिक ओशन. क्लियर? सो इफ यू सी द लोकेशन ऑफ बे ऑफ बंगाल, इट कनेक्ट्स टू इंपॉर्टेंट ओशंस ऑफ द वर्ल्ड. कौन कौन से? इट कनेक्ट्स इंडियन ओशन विद पैसिफिक ओशन, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स. ट्रेड एंड कॉमर्स. क्लियर एवरीवन? सेकेंड, लिंकिंग ईस्ट एंड वेस्ट. सो इट क्रिएटेड अ कंड्यूट between the east and the west in terms of trade and culture. Now if you see the culture of east Asia, importance of Ramayana समझ में आ रहा है? For example इंडोनेशिया, ओके, साउथ ईस्ट एशिया में आप देखेंगे बुद्धिस्ट कल्चर है, हिंदुइज्म कल्चर है. एंड सबसे बड़ा हिंदू टेंपल कहां पर? अंकोर वट, कंबोडिया. समझ में आ रहा है? ये याद रखिए. सो दिस लिंक्स ईस्ट एंड वेस्ट. थर्ड थिंग इज सिक्योरिटी. नाउ सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन दिस एरिया आर लाइफ लाइन्स फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक सिक्योरिटी. एंड ये रीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनर्जी सिक्योरिटी. नाउ टुडे इंडिया इज, आज इंडिया क्या है? इंडिया इज एनर्जी हंगर नेशन. आज इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनर्जी सिक्योरिटी. समझ में आ रहा है? एंड इंडिया नीड्स टू डाइवर्सिफाई इट्स एनर्जी नीड्स. ओके, इंडिया शुड नॉट डिपेंड इटसेल्फ ओनली ऑन गल्फ रीजन. इंडिया शुड डाइवर्सिफाई इट्स नीड्स in terms of energy security. Clear? Then regional cooperation, very important. Regional cooperation. Now today if you see India, India's aspiration is to become a superpower and global power. But without becoming a regional power, India is unable to become a super or global power. So first, India needs to solve its neighborhood problem. So Bay of Bengal neighbors, they are also a part of India's neighborhood itself. So regional cooperation is necessary.
So Bay of Bengal provides an opportunity for greater regional cooperation in the environmentally friendly exploration of marine and energy resources. Okay. This can also be a part of blue economy. Blue economy. And another thing is biodiversity. This bay has a biodiverse marine environment. It is also a home of many rare species, marine species, and also mangroves. Clear? And then geopolitical importance. If you see Indo-Pacific concept, in terms of Indo-Pacific, as I have already told you, that this region connects Indian Ocean with Pacific Ocean. So, an Indo-Pacific orientation or under Indo-Pacific buzz, Bay of Bengal is having regional importance. Okay. So, the realignment of global economic and military power towards Asia, this have had a considerable impact on the Bay region. So, India needs to secure this region from the rival powers. So today, Bay of Bengal again becoming a geopolitical theater in 21st century. Clear everyone? So I hope this much is clear. Now if I ask you what are the issues at the Bay? अब कौन से issues हैं? There are various issues. And the most important issue, or you can say the common issue, is environmental issue. Why? As I have already told you just now, that this area is an important in terms of rare species. And because of environmental impact or environmental issues, those species, okay, are those species are becoming extinct in nature. That means species extinction has become an issue due to careless exploitation of maritime environment. Okay. And there are various problems in this region. First of all, the most important problem is population growth, land use, excessive resource exploitation, then rise in the level of sea. Okay. Climate change. These things are straining the Bay of Bengal's environment. Frequent cyclones, floods, everything. Clear? And then the discharge from feeder ships or ship collisions, oil spills. Oil spill is one of the most important topic in your environment and ecology. Okay, environment and ecology. How it impacts maritime environment. Industrial waste, pollution, accumulation of plastic. All these things has resulted in the formation of dead zone, are vulnerable to maritime species. Clear? Then mangrove trees. Okay. These trees protect the shore from the fury of nature under threat. Okay. So this is the responsibility of all the South Asian nations as well as Southeast Asian nations to protect mangrove trees. And then another important issue is expansion of power. Today, if you see, this region become a geopolitical theater between India, China. Both are rising powers. Clear? So the region's maritime environment has changed. And that is why major powers are expanding their economic and geopolitical influence in this region. And one of the main concern here is security concern. There are various non-traditional dangers like terrorism. This have become more prevalent in this area. Various insurgent groups, various terrorist groups. Clear? Remember this thing. So,
what do you mean by dead zones? As I have mentioned here, like the formation of, you can see here, डेड जोन. अब ये डेड जोन होते गए हैं. डेड जोन वो जोन होते हैं विच आर लो ऑक्सीजन और हाइपोक्सिक एरियाज. हाइपोक्सिक याद रखिएगा जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है इन वर्ल्ड्स ओशियन एंड लेक्स, and most of the organisms do not survive in these areas. This can be asked in your prelims examination. तो ये आप वीडियो देखने के साथ ही साथ नोट डाउन भी कर लें. समझ में आ रहा है? अब आपसे पूछ दिया यूपीएससी ने डेड जोन्स क्या है, आपको पता ही नहीं. क्लियर? तो ये एक इकोलॉजिकल टर्म है. Clear everyone? Remember this. Now, what potential does Center for Bay of Bengal Studies hold? अब ये जो सेंटर बनाया जा रहा है नालंदा यूनिवर्सिटी में, ये क्या क्या पोटेंशियल, ये किस तरीके से रिवाइव करेगा, रिन्यू करेगा बे ऑफ बंगाल स्टडीज को? तो बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी. पहली चीज, मेन फोकस इनका होगा किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज को जनरेट किया जाए इस रीजन में. क्लियर? तो फर्स्ट थिंग इज जनरेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज. जनरेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, that means Center for Bay of Bengal Studies, they will offer collaborations in geoeconomics, geopolitics, ecology, trade, connectivity, maritime security, blue economy, everything. So this center is going to offer collaboration. That means they will offer a kind of consolidated or connective steps in terms of geoeconomics with geopolitics. Okay. Then ecology, trade, connectivity, everything. And then they will try to understand the potential of this region. Clear? Another importance is, आज का जो मेन स्लोगन है, मेन जो ग्रोथ है, दैट इज सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर ऑल. एंड ये इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है. समझ में आ रहा है? जिससे इंडिया अपनी मैरीटाइम एंगेजमेंट को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहता है, ताकि पूरी तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस किया जाए. दैट मींस सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, नॉट ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल, होलिस्टिक मैनर. समझ में आ रहा है? इन्वायरमेंट का एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो और इकोनॉमिक ग्रोथ भी. क्लियर? एंड देन प्रमोशन ऑफ पार्टनरशिप. This will also promote the nautical neighbors like Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, and other partners, so that our neighbors can cooperate, okay, in terms of maritime domain, and this should be interrelated and interdependent in nature. And then this center is going to offer interdisciplinary research, which is very important, okay, for any invention or discovery or any unique or scientific invention. We need research and development. So this center will serve as a unique interdisciplinary research, okay, and this center is totally devoted towards Bay of Bengal region in terms of teaching, research, and capacity building. Okay, so this center is going to provide various recommendations to the government through their research and developments. So scholars not only from India, not only from Southeast Asia, scholars from many countries and different academic streams, they are already participating in Center for Bay of Bengal Studies first certificate program on the Bay. So this center has already started first certificate program, and already various scholars started participating in this program. Clear everyone? Remember this. Now the question here is, what lies ahead? Okay, so before discussing this, what lies ahead, as we all know, Center for Bay of Bengal is very important in terms of geopolitical influence. Okay,
So if we see in the new millennium, the bay has emerged as a significant subject of the debate in popular as well as academic discourses. Clear? So, Bay of Bengal is a kind of waterscape. This has already been characterized by an absence of any major territorial conflicts or claims. Okay. So, this is very important in terms of connectivity. Even if you see the era of British colonialism or European companies, okay, so the importance of monsoon winds, important if you see history from historical point of view, monsoon winds. Clear? Now, monsoon winds, if you see, they established and also connected the dominant trade routes which shaped migratory trends till the onset of colonial intervention. Clear? And as a result, consequent introduction of steamship navigation. So monsoon winds like this. So Vasco da Gama reached here in Kerala, and then the Europeans started moving towards this region, that is Bay of Bengal. Clear everyone? Remember this thing. So this area is very important. So if you see European trading settlements and experiments and also ambitions, okay, they left a trace of Portuguese, Dutch, Danish, French, British and other presences in this region. Okay, remember this thing. That is why among Europeans, Britishers, they established their colony in Bengal region. British. That is in 1757, Battle of Plassey, and another Battle of Buxar in 1764. This we need to understand. Clear everyone? ओके तो ये याद रखिएगा. तो बे ऑफ बंगाल रीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो ऑलरेडी द न्यू फेज ऑफ बे ऑफ बंगाल स्टडीज have already started. So this region is important in terms of economic point of view as well as cultural point of view. Economic as well as cultural point of view. Clear? How cultural? In terms of Buddhism, in terms of Hinduism, in terms of Islam also. Clear? Everything. Okay. Economic importance, important part of Silk Route, maritime Silk Route, how spices, silk and connectivity with Indochina land. Indochina land. Okay. So in this 21st century, this region is a gateway towards Southeast Asia. Towards Southeast Asia. Now, if this region is a gateway towards Southeast Asia, so India has started a policy called as Act East policy. So under Act East policy, this region is also important. Okay. This region is also having significance. Clear? And the most important organization in terms of Bay of Bengal initiative, that is BIMSTEC, which was established in 1997 and its headquarter is in Dhaka. Headquarter is in Dhaka. Okay. So after 2016, that is after Uri attack, SARC becomes a defunct organization. So India
has substituted SARC or replaced SARC through Bay of Bengal initiative, that is BIMSTEC. क्लियर? तो इंडिया ने आज बिम्स्टेक के थ्रू सार्क को क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया. बिम्स्टेक इज ऑल्सो कॉल्ड एज सार्क माइनस पाकिस्तान. But BIMSTEC is having its own importance and SARC is having its own importance. We cannot compare SARC with BIMSTEC. No. BIMSTEC is just a kind of economic integration of two regions, that is South Asia with Southeast Asia. But SARC is a part of regional cooperation. Okay. So both SARC and BIMSTEC both are complementary to each other. ओके दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे की जगह नहीं ले सकती. इस साल यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया है जीएस पेपर 2 में. क्लियर एवरीवन? ये याद रखिएगा. ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट लाइज अहेड? सो देयर आर फ्यू कंसर्न्स दैट नीड इमीडिएट अटेंशन. पहली चीज जिस पे फोकस करना है, एक्सपेंडिंग कोऑपरेशन इन मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. पहली चीज, जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं उनसे हमें क्या करना है? सिक्योर करना है इस रीजन को. देन एनहेंसिंग कोऑपरेशन ऑन मैरीटाइम कनेक्टिविटी एंड देन ईज ऑफ मैरीटाइम ट्रांजिट. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बूस्टिंग इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज. समझ में आ रहा है? अगर आपको किसी रीजन का पॉलिटिकल इंटीग्रेशन करना है तो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन एक ही चीज के बेसिस पर होगा, दैट इज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैसे? थ्रू इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज. क्लियर? सो बूस्टिंग इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज इन मैरीटाइम कनेक्टिविटी. देन लिटोरल गवर्नमेंट्स, जितने भी लिटोरल स्टेट्स हैं लाइक इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, इन सभी नेशंस को सपोर्ट करना चाहिए एंड प्रमोट करना चाहिए स्किल बिल्डिंग, रिसर्च एंड ट्रेनिंग पर. एंड देन कंट्रीज इन द रीजन विल नीड टू मोबिलाइज इंसेंटिव्स एज वेल एज इन्वेस्टमेंट्स. और सभी को मैनेज करने चाहिए ओशियनिक अफेयर्स को बहुत ही इफेक्टिवनेस के साथ. क्लियर? तो ये आपका कंक्लूजन हो सकता है. ओके अब कुछ फैक्ट समझ लेते हैं बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड. बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड फैक्ट्स क्या है? बे क्या होता है? अगर हम ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक याद रखिए कोस्टल वाटर बॉडी होती है जो कनेक्ट करती है मेन वाटर बॉडी से. ओके जैसे कि लेक हो गया, ओशन हो गया या लार्जर बे हो गया. क्लियर? अब बे ऑफ बंगाल की यूनिकनेस क्या है? ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा या लार्जेस्ट बे हम कह सकते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बे. लोकेशन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन. अब फॉर्म कैसे हुआ बे ऑफ बंगाल? टेक्टोनिक, याद रखिएगा, थ्रू प्लेट टेक्टोनिक्स. क्लाइमेट क्या है बे ऑफ बंगाल रीजन का? मॉनसून क्लाइमेट. अभी मैंने मॉनसून विंड्स के बारे में भी बताया. क्लियर? कौन कौन सी मेजर रिवर्स हैं जो फ्लो करती हैं बे ऑफ बंगाल में? गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्रा, ओके, अय्यारवाड़ी रिवर. इन सभी को मैपिंग कर लीजिएगा फॉर ज्योग्राफी. क्लियर? देन प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं? अब कौन कौन से नेशनल पार्क है? लाइक भितरकनिका नेशनल पार्क, मैनग्रूव्स, गहिर माथा मरीन सेंचुरी, सी टर्टल्स. ओके देन टेकनाफ गेम रिजर्व, वाइल्ड एलिफेंट्स एंड बर्ड्स पाए जाते हैं. एंड देन सुंदरबंस नेशनल पार्क जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनग्रूव फॉरेस्ट है. क्लियर? अब मेजर पोर्ट कौन कौन से हैं? चित्तगोंग, मोंगला, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता, ये सब मेजर पोर्ट्स. आइलैंड्स कौन कौन से? अंडमान निकोबार, ओके, मरगुई ग्रुप्स, चेजुबा आइलैंड, ये सारे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं. हो सकता है आप में से काफी लोगों ने इन दोनों ग्रुप के बारे में ना सुना हो, सर्च करिएगा. एक एक फैक्ट्स इसीलिए मैं कवर करता हूं वीडियो में ताकि आपकी होलिस्टिक प्रिपरेशन होनी चाहिए. एंड देन बीचेस, कॉक्स बाजार, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बीच, मरीना बीच, बखाली, दीघा, चंदीपुर, पुरी, वॉल्टेर, ये सब इंपॉर्टेंट बीचेस हैं बे ऑफ बंगाल रीजन के.
तो ये कुछ फैक्ट्स है, दीज आर सम फैक्ट्स विद रेस्पेक्ट टू बे ऑफ बंगाल रीजन। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और एक एक पर्सपेक्टिव मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया, ताकि आपकी प्रिपरेशन पूरी हॉलिस्टिक होनी चाहिए। और यही हमारा मेन एम है, ताकि आपको एक सही दिशा दे सके और आप अपनी तैयारी में सफल हो सके। सो इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आईक्यू सिविल्स आईएएस एपीएससी यूपीएससी के नाम से है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।